Hi everyone, welcome to Listen to Romshri. Today we are going to talk about something which has very recently been introduced to the world, even though I personally have had a privilege of being introduced to this concept some months back. Uh, अभी एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे which has become quite a rage, which is called Another Self, you know, and it is dealing with something which people were not aware about as much. It is not there in the public sphere. uh, and what we're talking about right here is family constellations. Now family constellations is something which I had no idea about that it exists also till till this May, at least I can say. उसके बाद मुझे इसके बारे में पता चला, एंड आई हैव इवन हैड अ सेशन, और जिनके साथ मैंने वो सेशन लिया था आज वो हमारे साथ है. रोमश्री इज हियर विद अस टू आंसर आवर क्वेश्चंस एंड जस्ट गिव अस more knowledge about what exactly family constellation is. Is it a spiritual practice? Is it something which is fiction, which another self has used quite successfully, I must say? Or and how does it affect our lives? How does it help our lives more than affecting it? So welcome, Romshri. I welcome to you to our podcast today, and thank you so much for being here. थैंक यू सो मच श्वेता फॉर हैविंग मी और बहुत अच्छा टॉपिक आपने दिया है फैमिली कॉन्स्टलेशन एंड एज यू मेंशन्ड अबाउट द नेटफ्लिक्स सीरीज अनदर सेल्फ इट्स अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप आई मस्ट से बाय द टर्किश सिनेमा बहुत अच्छी अच्छी सीरीज टर्किश सिनेमा करता आ रहा है और फैमिली कॉन्स्टलेशन जैसा आपने बोला कि इज इट फिक्शनल इज इट साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तो आई वुड से दैट इट इज ऑल ऑफ देम so not only is fictional, when we talk about imagination, imagination is also the purest source of reality. तो कहीं से तो वो source है जहाँ से वो चीजें आ रही है. और I believe because I have been working in this field for many years now. I'm a clinical hypnotherapy therapist and I'm a theta healing instructor also. तो ये जो फ़ील्ड है, ये सारा का सारा आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है. And as we talk about genetics and epigenetics, where we say that, our physical structure, our eye color, our hair structure, our physical structures, all, have been inherited by our ancestors. तो अगर हमने physical aspect inherit किया है अपने ancestors से, तो कहीं न कहीं metaphysical aspect भी किया है, which is their belief systems, which is their Hmm, emotions, which is hmm, their thoughts patterns. तो फैमिली कॉन्स्टलेशन डील करता है आपके फैमिली के एनर्जी फील्ड से एंड इट hmm, इज मोर लाइक एन इन्वेस्टिगेशन लाइक अ टेस्टिंग hmm, कि देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा एनर्जी ब्लॉक हुआ था हमारे हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ आवर hmm. एंसेस्टर्स हिस्ट्री ऑफ आवर फैमिली फील्ड जहाँ पर कुछ ब्लॉक आ गया और आज वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है. Romshi, before we talk more about family constellations, and thank you so much for this wonderful introduction that you've just given us, जो कि मैं बोलूँगा कि it's not even a gist of what family constellation is. वो इतना वास्ट फील्ड है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, जिसके बारे में ये शायद जितना आपने अभी बताया वो भी अभी काफ़ी नहीं है. हम इस चीज़ को खोलेंगे अभी, आपसे और जानेंगे इस बारे में, बट बिफोर वी डू दैट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, एंड इट इज़ नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम थिंग्स दैट आई हैव हर्ड और रिसर्च किया है रोमश्री के बारे में. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो, दैट रोमश्री इज अ पर्सन हु हैज बीन, I don't like using words like change and all, and I think Romshri will agree with me. I think Romshri has been positively affecting a lot of lives, and I've just been very fortunate to be one of those people, because I have been dealing with Romshri regarding a lot of issues I have had, and I've been talking to Romshri for a lot of time. So Romshri, I just want you to I also want to tell people Romshri she's been running an academy. She's been doing so many things, and Romshri, I know that आपका अगर अभी introduction करेंगे, so this podcast will become very, like, it'll be very short for that. But if you can just give a very brief introduction about you and your work in general before we move on to our topic. I would just say that I have been working on human consciousness for a long time because मेरा starting से interest था, like I could remember few of my past lives as a child. तो थोड़ा inclination हुआ है, but then we tend to forget things. But then Hmm, again, these things came into my life. I learned many things like sciences related to subconscious mind. For example, clinical hypnotherapy and hmm, past life regression is a very famous aspect of clinical hypnotherapy. So I've been learning, I've been teaching, and I'm running my own academy, as you said, Awakening Love Academy, and I'm teaching more than 36 courses there, like
tarot, awakening family bonds. Family constellation is also one of them. I am teaching, and people are becoming facilitator of this science now. So it's going on a beautiful journey, and I have this honor of meeting wonderful people like you who are changing this planet. So this is a blessing. Thank you so much, Romshi. Thank you so much. I mean, a lot of people will call you a blessing in their lives. And thank you so much again for being here. I feel very lucky to be talking to you about these things because I have also gained a lot of interest, after talking. And I'll be very honest. Like, आई डिडंट हैव अ बिलीफ इन ऑल दोज़ थिंग्स और मैं उस चीज़ को अभी भी बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूँ एंड थ्रू दिस पॉडकास्ट ऑफ आवर्स आई वांट एंड वी बोथ वांट मोर एंड मोर पीपल टू जस्ट बी अवेयर ऑफ इट, माने ना माने, किस तरीके से रिसीव करे वो तो उनके ऊपर है। बट हमारा काम है बस इस चीज़ को अवेयरनेस तक लेके जाना एंड आई होप more and more people get to know about this. So coming back to family constellation, Romshri, if if you have to start from the beginning, like I know a lot of people have seen another life and another life बहुत अच्छे से उस चीज को डील करता है, Another self, बट अगर right? सॉरी Another self. अनदर सेल्फ या अनदर सेल्फ उसको बहुत अच्छे से डील करता है। बट अगर आपको एक नए आदमी को जो इसको शायद Mm. प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सिर्फ सुन रहा है इसके बारे में, अगर उसको इफ यू हैव टू टॉक टू हिम अबाउट फैमिली कॉन्स्टलेशन एंड टेल हिम अबाउट इट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट टू हिम? Okay. So people who have no knowledge about these things, spiritual things or metaphysical thing, or I must say the aspect which we call subconscious mind. So I would say that family constellation is something which works on your the soul of your family. Like we have a soul, every individual has a soul. तो ऐसे हमारी फैमिली का भी एक सोल है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम्पल ले लें, आपका मोबाइल फ़ोन है, उसका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है। हाँ, अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं होगा तो आप यू आर नॉट एबल टू check your phone, you're not able to use your phone. So similarly, your family has a field which is always, silently working. जैसे हम देखते हैं ओशन में बहुत सारे फिश एक साथ जा रहे हैं, एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं। दे नो कि अब कभी लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है। आसमान में हम बर्ड्स के बंच को देखते हैं कि कैसे वो जा रहे हैं, उनकी मूवमेंट कितनी सिमेट्री में है। तो ऐसी वो उनके बीच में क्या ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है जो सुनाई नहीं दे रहा, वो कौन-सी लैंग्वेज है? एंड दैट लैंग्वेज इज़ एनर्जेटिक कम्युनिकेशन जो हमारे थॉट्स करते हैं एक-दूसरे से। तो एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ हमेशा हम कनेक्टेड रहते हैं थ्रू दोज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और वो फ़ील्ड कौन क्रिएट करता है, वो फ़ील्ड करती है हमारी मेमोरीज़, हमारा रिलिजन, हमारा कल्चर, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, उसका जो कल्चर है, उसकी जो हिस्ट्री है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उस फ़ील्ड को क्रिएट करते हैं। सो विदाउट सेइंग अ वर्ड, यू आर ऑलवेज़ कम्युनिकेटिंग विद योर फैमिली। और वो मूवमेंट क्या सिमेट्री में जा रही है या किसी रीज़न से वहाँ पे कुछ ब्लॉक आ गया है और आपका कम्युनिकेशन किसी हर्टफुल मेमोरी की वजह से शायद ब्लॉक हो गया है। Perhaps you are labeling your family members as a victim. Somebody is a victim in your family. Somebody, in your subconscious mind, you put labels. This is a victim. इसने पूरी ज़िंदगी सफ़रिंग झेली है। शायद इसकी वज़ह से झेली है, तो ये पर्परेटर है। तो देयर आर सो मेनी लेबल्स। तो उन लेबल्स की वज़ह से वो जो एक सिमेट्री में हमारी मूवमेंट चलनी थी लाइफ़ की, वो गड़बड़ हो जाती है। तो फैमिली कॉन्स्टेलेशन इज़ लाइक एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। आई वुड नॉट से इट्स एन healing. Of course, we reach to healing and resolution, but the entire process is an investigation कि पीछे जाके हम देखते हैं कि कहाँ पर इस कम्युनिकेशन में ब्लॉक क्रिएट हो गया because of some hurtful event or some heavy destiny of some ancestors. तो वहाँ हम जाते हैं, उस एनर्जी को हम अनब्लॉक करते हैं एंड दैट एनर्जी flows in your current life. It's all about energy. It's all about the flow of energy, nothing else. सो एक चीज, ओके, बिफोर आई आस्क दिस क्वेश्चन, बिकॉज़ ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा वहाँ से आ रहा है क्योंकि मैंने किया हुआ है। तो बहुत Right. लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा। तो अगर Mm. आप इफ यू कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इट, ये तो जो हमने अभी बात की, दैट इज़ द थ्योरी बिहाइंड इट, दैट इज़ द साइंस बिहाइंड इट, ओके? बट इन प्रैक्टिस, इफ यू कैन एक्सप्लेन फॉर आवर लिसनर्स, हाउ डज़ इट एक्चुअली हैपन? Like say for example, what is your role in it? How is who is the person who's coming to you? For example, it's a for the lack of a better word, it's a patient, for example, who's coming to you with a problem, you know
वो आपके पास आया है, तो ये आप इसको किस तरीके से एग्ज़ीक्यूट करते हो? इज़ व्हाट माय क्वेश्चन इज़। हुँ, ओके। सो प्रैक्टिकली। फैमिली कॉन राइट। फैमिली कॉन्स्टेलेशन 2 तरीके से होता है, जैसे हमने नेटफ्लिक्स की सीरीज़ में देखा है अनदर सेल्फ में कि ग्रुप सिनेरियो में हो रहा है, वहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर्स बैठे हुए हैं, जो शायद एक-दूसरे को जानते हों या नहीं जानते हों, डज़न्ट मैटर। और जो क्लाइंट है, हम क्लाइंट वर्ड यूज़ करते हैं, तो जो क्लाइंट है वो प्रैक्टिशनर को अपना इश्यू बताता है। अब इश्यू कुछ भी हो सकता है, कैन बी अ फिज़िकल इश्यू, कैन बी अ डिसीज़, कैन बी अ फाइनेंशियल इश्यू दैट यू आर नॉट एबल टू सेव मनी, perhaps it's a career issue that you're not able to achieve, a desired position, or it can be a relationship thing, could be anything, right? सो 2 तरीके से होता है जैसा अनदर सेल्फ में हमने देखा कि वहाँ पर वो ओपनली बता रहे थे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्वी का रोल प्ले कर रहे हो या आप जिस जो भी क्लाइंट है उसका नाम बता रहे हो, उसको हम कहते हैं ओपन कॉन्सलेशन दैट मीन्स ग्रुप में जितने भी लोग बैठे हैं वो जानते हैं हम किसका रोल प्ले कर रहे हैं। हुँ, और जो क्लाइंट है वो उनको रोल असाइन करता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रोल प्ले करेंगे और एंड उस विद देयर इश्यू से नॉलेज। हाँ, उस इश्यू से रिलेटेड ओके, वो बाकी लोगों को कैरेक्टर्स को रोल असाइन करता है। और उस फ़ील्ड को हम बोलते हैं द नोइंग फ़ील्ड। तो वहाँ ऐसा कुछ मैजिक नहीं होता है। वो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है आपकी फ़ैमिली का जहाँ पे सारी मेमोरीज़ है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। और वो जो फ़ील्ड है दैट इज़ द बॉस ऑफ फैमिली कॉन्स्टेलेशन, नॉट द फैसिलिटेटर, नॉट द कैरेक्टर्स। तो वो फ़ील्ड उन लोगों को उन मेमोरीज़ के लिए एक्सेस दे देता है और पर्सन वैसा ही फ़ील करने लगता है जैसा रोल उसको दिया गया है। तो अगर किसी की मदर का रोल दिया गया है और मदर को नीज़ में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है जो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है उसको नीज़ में पेन होना शुरू हो जाए या हेवीनेस फ़ील होने लग जाए। तो वाओ! वो फ़ील्ड फिर उसको मूवमेंट देता है और धीरे-धीरे पर्सन को एक्सेस मिलती है इमोशंस और थॉट्स की, जिस व्यक्ति को शायद वो जानता भी नहीं है और वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लगता है। और जो क्लाइंट है वो अपनी आँखों के सामने इस वक़्त 3D रियलिटी देख रहा है। आप जब अपने ज़िंदगी में फैमिली में जी रहे हो तो आप 2D में जी रहे हो। एज़ अ श्वेताब आप देख रहे हो कि अच्छा ये मेरी मदर है और इनके लिए मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, ये मेरे से ऐसे बात कर रही है। मगर जब आप कॉन्स्टेलेशन में बैठकर देखते हो किसी और व्यक्ति को, तो नाउ इट्स 3D रियलिटी। तो आपका जो पहले इनर व्यू था, वो यहाँ पर हो सकता है कि उसमें कुछ ब्लॉकेजेस थे या इश्यूज़ थे। पर जब आप अपनी आँखों से देखते हो कि कैसे-कैसे उस फ़ील्ड में चीज़ें रिज़ॉल्व हो रही हैं, जो शायद रियल लाइफ़ में आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर वो कैरेक्टर्स एक-दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो आपका उस सिर्फ़ उसको देखने से ही इनर व्यू चेंज होने लग जाता है। क्योंकि वहाँ पर चीज़ें एक्सप्रेस होते-होते अब वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं क्योंकि एज़ अ फैसिलिटेटर हम फैसिलिटेट करते हैं कैसे रेज़ोल्यूशन तक नेचुरली पहुँच जाती है। मगर क्लाइंट के सबकॉन्शियस में क्या होता है कि जो पहले इनर व्यू था वो अब शिफ्ट हो गया। अब इनर व्यू कुछ और रजिस्टर हो गया माइंड में व्हिच इज़ रेज़ोल्यूशन। तो वी ब्रिंग हार्मनी बाय इन्वेस्टिगेटिंग दैट वेयर इज़ द ब्लॉक एंड हाउ टू अनब्लॉक इट। और ओके, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम नहीं बताते जो मैं प्रेफ़र करती हूँ ब्लाइंड कॉन्स्टेलेशन जहाँ पर हम किसी भी कैरेक्टर को ये नहीं बताते आप क्या प्ले कर रहे हो। वो सिर्फ़ मेंटली ही क्लाइंट अपनी रोल असाइन करता है और वो बहुत प्योर होता है क्योंकि कैरेक्टर्स को बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या प्ले कर रहे हैं, एंड तक नहीं पता एंड इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मैजिकल। ओके। सो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि से you when you talk about the electromagnetic field, obviously, so the client has told you what his issues are and he's given the role to different people, whether with their knowledge or without their knowledge, you know. But जब वो लोग जो रोल प्लेयर्स हैं, वो जब आते हैं फील्ड के अंदर, तो doesn't the field all change according to their energies? People who are entering the field and the issue is about the client. तो क्या उनके आने से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो जाता? बिकॉज़ aren't there like 4-5 souls then in that field? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो इसके लिए थोड़ा-सा टेक्निकली समझना पड़ेगा कि वो फ़ील्ड क्रिएट कब होता है। क्रिएट तब ओ होता है जब रोल असाइन कर दिए जाते हैं, उससे पहले कोई फ़ील्ड नहीं होता वहाँ पे। ओके, So ओके। the moment the roles are assigned, this is the reason we call it constellation. Constellation नक्षत्र को कहते हैं जो आसमान में होता जी, है, जो जी। जो स्टार्स ग्रुप क्रिएट करते हैं constellation. तो हुँ, when the people are constellated, that means उनको एक पोजीशन दी जाती है
क्लाइंट उनको Hmm. इंट्यूटिवली लेकर जाता है, कहीं पर भी खड़ा कर देता है और अपने माइंड में कह रहा है दैट यू आर प्लेइंग माय मदर, यू आर प्लेइंग माय फादर और हम उनको बोलते हैं इंट्यूटिवली कहीं पर भी इनको प्लेस कर दो, किधर भी फेस Okay. करके खड़ा कर दो। तो वहाँ पर आप देखना एक शेप बनती है, आपने तो कॉन्स्टेलेशन देखा है, तो कोई Hmm. बहुत दूर खड़े हैं कैरेक्टर्स, कई कैरेक्टर्स को क्लाइंट पास में लाके खड़ा कर देता है, तो कई बार ट्रायंगल बन जाता है, कई बार सर्कल बनता है, कई Hmm. बार एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है एनर्जेटिकली। So once the people are constellated, then the energy field is being formed there. And then, it starts unfolding. उससे पहले जो क्लाइंट जो भी पीपल हैं वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके थॉट्स गवर्न कर सकते हैं, but the moment you give them a role, they have withdrawn their own personality and they have taken up the role they have been assigned for. That's actually quite interesting. And actually, जैसे अभी आपने बोला, I've not just seen it, I've been part of that field. And Right. like from my personal experience, I can say that yes, I did feel something, and even when I was a client and when I had assigned a role to someone, and I mean, when that person came out, एक तो अंदर भी Mm. जब क्योंकि मैंने शुरुआत के रोल तो मैंने ही असाइन किए थे, बाद में आपने और भी लोगों को इस पे भी हम अभी आएँगे कि आप इसको कैसे प्रोग्रेस करते हो। बिकॉज़ दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच आई सॉ। तो मैंने तो जब शुरू के रोल असाइन किए थे, तो मुझे पता था कि कौन-कौन है, मैं कौन हूँ। और जब आपने कुछ सवाल पूछे और जिस आदमी को मैंने रोल असाइन किया था, उसने जो इमीडिएटली चॉइसेस ली थी, आई वुड हैव डन द सेम थिंग। I would have taken the same choices. So, and I was surprised. I was amazed that there is something here. और एक दो चीज़ों में नहीं और स्पेशली मुझे आज तक याद है आई कांट ऑब्वियसली शेयर दैट थिंग हियर इट जस्ट बी टू पर्सनल मे बी एट अ लेटर स्टेज बट जिन आदमी जो मेरा रोल प्ले कर रहे थे उन्होंने बाहर आके मुझे एक ऐसी बात बोली थी अबाउट व्हाट ही वाज फीलिंग एज अ पर्सनैलिटी आई वाज लाइक आई मेट दिस गाय फॉर द फर्स्ट टाइम it's not Right. possible that he knows me at all. I don't know him. And he said something which, as a personality, I've been struggling with for so many years. And when he said it, I was like, okay, this is something interesting which is happening here. So yes, I just wanted to share that because obviously listening to you, you're the facilitator, आप ये चीज़ करा रही हैं. But अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जिसने जेन्युइनली मेरा किसी चीज़ में एक पर्सपेक्टिव चेंज किया है, तो आई थिंक आई शुड आल्सो बी शेयरिंग इट। सो Absolutely. सो फ्रॉम देयर आई जस्ट वांट टू आस्क यू रोमश्री कि अब इस चीज़ के थोड़ा प्रोग्रेशन पे बात करते हैं, फैमिली कॉन्स्टेलेशन का। Yes. जैसे आपने अभी बताया कि रोल प्लेज़ आए। एज़ अ फैसिलिटेटर, how do you make sure that we reach to the main issue or at least try to reach to that point which is affecting the current issue of the client? How do you reach there? Like, what all do you do to reach there? Okay. So first of all, basics of constellation is that we do not do family constellation to reach or to push the resolution. We don't know. Only the knowing field knows. So we don't know Hmm. what is going to happen. And as I mentioned earlier, also family constellation is an investigation process. We just try to check that what is there, what is working, and what is not working. Sometimes constellation does not reach a resolution, but the knowing field starts moving. Sorry, stops moving, and that's the moment when we say, okay, constellation is over. तो अगर आपने नेटफ्लिक्स का सीरीज देखा उसमें भी कुछ बहुत सारे 8 एपिसोड्स हैं और 8 एपिसोड्स में काफ़ी सारे कॉन्स्टेलेशंस दिखाया है। तो कुछ कॉन्स्टेलेशन में उन्होंने भी बीच में उसको स्टॉप कर दिया बिकॉज़ द नोइंग फील्ड वाज़ नॉट वर्किंग। So, as a facilitator, we have to keep in our mind that we are not pushing for resolution. We are just investigating what is the block, what is working. If there are certain statements which we call truth statements, like what a child would say to a mother, so the energy can be unblocked. There are certain Okay. orders of love. For example, elders give and younger people or small people receive. The order cannot be in reverse order. Like energy का flow है, कुछ भी है तो ऊपर से नीचे की ओर आता है. So it can never Hmm. go, upside down. Down. तो Yeah. अगर आपने ये बोला है कि there is a mother and if mother is saying that I am mother and you give I receive तो कुछ प्रॉब्लम है और लाइफ में प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं अननोइंगली. ओके, तो वहाँ पर इन कॉन्सुलेशन वी जस्ट चेक कि अब क्या हो रहा है, क्या ट्रुथ स्टेटमेंट वर्क कर रहा है. समटाइम्स व्हेन वी
I would give you an example. तो एक कॉन्स्टलेशन में एक बार टू पीपल वर प्लेइंग मदर एंड डॉटर एंड आई आस्क्ड द डॉटर टू टेल द मदर। अच्छा, मैं क्योंकि ब्लाइंड कर रही हूँ, इन लोगों को नहीं पता था व्हाट दे वर Your प्लेइंग, mother daughter, yeah. राइट? तो मैंने डॉटर को बोला कि ओके टेल दिस पर्सन लाइक द मदर, यू आर बिग, आई एम स्मॉल। एंड शी सेड नो, आई डोंट फील लाइक सेइंग दिस। एंड आई सेड व्हाई? शी सेड आई फील आई एम बिगर एंड शी इज स्मॉल। तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसी स्टोरी थी जहाँ पर डॉटर ने अननोइंगली मदर को बहुत सपोर्ट किया, और सपोर्ट करते, 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 करते शी बिकेम द मदर ऑफ हर मदर एनर्जेटिकली। And तो I'll हम just sorry, I'll just quickly, because ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला, व्हेन यू से कि उन दोनों ने ये चीज़ करी, और एक्चुअली वो लाइफ स्टोरी उस क्लाइंट की थी हू सिटिंग आउटसाइड द फील्ड, राइट? राइट, Those two, that was this was not an issue which these two were talking about. They were just role players. So रोल प्लेयर्स, basically, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, तो वो जो 2 लोग थे वहाँ पे, वो किसी और के डॉटर थे और वो किसी और की मदर थी, है ना? और राइट, वो राइट, बाहर थी फील्ड के. So that is the राइट, exciting thing about family constellation. Yes. So it's this is just amazing. राइट। तो Yeah. पॉइंट यही है कि रेज़ोल्यूशन पर पहुँचना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता, ये रहता है कि जस्ट इन्वेस्टिगेशन व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। सो द पर्सन सेड नो, आई डोंट फील लाइक सेइंग इट। तो एज़ अ फैसिलिटेटर मुझे इश्यू पता था उस लड़की का, उस क्लाइंट का, कि उसने हमेशा अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड शी फॉरगॉट दैट शी वाज़ अ चाइल्ड। Then I Hmm. changed the truth statement and I told her to say that even though unknowingly I became your mother, but today I acknowledge that you are my mother, you are big and I am small. तो जब ये थोड़ा-सा शिफ्ट किया डायलॉग, then she said, "Yes, I am feeling like, it makes sense now." And something got unburdened in her, you know. So she felt the instant relief by just speaking those words. तो वो एनर्जी वहाँ अनब्लॉक हो गई। तो एज़ अ फैसिलिटेटर हम चेक करते रहते हैं, अच्छा व्हाट इज़ वर्किंग, व्हाट डायलॉग इज़ वर्किंग, व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। मान लो एक पर्सन है, वो कॉन्स्टेंटली सिर्फ फ्लोर को ही देख रहा है, कोई रोल प्लेयर है और वो कह रहा है मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है, मेरे को बस फ्लोर को ही देखना है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है, इट्स अ वेरी डीप स्टडी। तो टेक्निकल एस्पेक्ट बोलता है कि अगर एक व्यक्ति सिर्फ फ्लोर को ही देख रहा है एज़ अ रोल प्लेयर, दैट मीन्स समबडी वाज़ डेड एंड नाउ आई नीड टू इंट्रोड्यूस समबडी हू हैज़ डाइड। अब वो कौन है, आई डोंट नो। तो वो नोइंग फील्ड धीरे-धीरे रिवील करेगा, बट एज़ अ फैसिलिटेटर मेरा वर्क है जस्ट टू चेक। अब ये ज़रूरी भी नहीं है, कोई बुक रूल्स नहीं चलते यहाँ पर। वी जस्ट कीप ऑन चेकिंग। तो हम वहाँ रख देते हैं कोई कुशन या किसी पर्सन को लिटा देते हैं कि ओके, नाउ चेक हाउ डू यू फील? इफ पर्सन सेज येस आई फील देयर इज़ सम लव्ड वन हू हैज़ डाइड, देन ओके। इफ पर्सन सेज नो आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, देन वी चेंज इट, देन वी ट्राई अनदर रूट। So we just keep on trying and checking, keep on trying and checking. And yes, energies, they get unblocked and we, 90% we reach the resolution and harmony. So इसमें maybe this question is very naive, but I just want to know कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो रोल प्लेयर्स होते हैं, obviously they are playing a very important role here, because उन्हीं के थ्रू जो है फील्ड आपसे बात करना चाह रहा है, या क्लाइंट को उनके इश्यू की तरफ, या इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके जा रहा है। इज़ देयर अ वे दैट द रोल प्लेयर माइट manipulate the field, manipulate the system by not really responding to what he's feeling, or not following his intuition that the field is giving him? इसके चांसेस हो ही सकते हैं ना, बिकॉज़ कोई हो सकता है फील्ड में जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, या वो जानबूझ के कि मैं तो यही बोलूँगा, आप मुझे ये बोलने बोल रहे हो, मैं ये बोलूँगा। इस टाइप की चीज़ें अगर होती हैं, पहली बात तो ये, क्या ये होने के चांसेस हैं और द फील्ड इज़ वेरी स्ट्रांग? और सेकंडली अगर ऐसे होती हैं, तो हाउ डू यू गो अराउंड अ प्रॉब्लम लाइक दिस? हाँ, तो बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए, क्यों नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं, हर एक चीज़ में हो सकते हैं, हुँ, इफ पर्सन जस्ट कम्स टू टेस्ट अस और जस्ट टू मैनिपुलेट थिंग्स। तो इंट्यूटिवली इफ वी फील लाइक दिस पर्सन इज़ ब्लॉकिंग द फ्लो, then we change. We release the person from the role and we take another person for the role. तो वो एज़ अ फैसिलिटेटर हमें पता लग जाता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। इंट्यूटिवली पता लग जाता है कि फील्ड कुछ और
कहना चाह रहा है। थोड़ी देर लगती है पर कई बार समझ में आ जाती है चीज़ें, सो वी रिलीज़ दैट पर्सन। बट ऐसा हाँ, होता नहीं है एक्चुअली बिकॉज़ मोस्टली पीपल कम हू आर रिसेप्टिव। एक्चुअली हाँ, क्योंकि मैं जैसे अपना भी एग्ज़ाम्पल दे रहा था बिकॉज़ आई ऑल्सो डिड अ रोल प्ले फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन द कॉन्स्टेलेशन वर्कशॉप दैट वी डिड टुगेदर। और मुझे याद है कि व्हेन आई वेंट देयर आई वाज़ लाइक कि पता नहीं, मुझे पता नहीं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट व्हेन यू आर इन द फील्ड, देयर आर इंट्यूशंस दैट इवन आई गॉट, यू नो, सिग्नल्स कि नहीं, अभी ये करना है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलना है, ये अगर आपको बोला जा रहा है बोलने के लिए तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट आई कुड रिकॉग्नाइज़ दैट इट वाज़ नॉट ओनली माय वॉइस। Maybe it is my voice, but it is not coming from my knowledge of what is happening. It is just giving, it is a signal I'm getting and I'm responding to that signal. So I can first hand vouch for that fact कि हाँ, मतलब कुछ तो है उस फील्ड में जो आपको देता है। दूसरा, from this I just want to know because you've been talking a lot about, you know, intuition and subconscious, you know. So what role and how important a role does intuition and subconscious play in this process of family constellation? Very important role. Intuition is something which is very normal. Everyone has it. राइट? तो जैसे कॉन्स्टेलेशन शुरू होता है, इंट्यूशन का मतलब ये नहीं कोई बहुत फ्लावरी इमेजेस दिखने लग जाएँगी, आपको बहुत क्लियर सिनेमा की तरह कुछ दिखने लग जाएगा, इट्स हाउ यू फील लाइक। तो फर्स्ट इनिशियली हम यही पूछते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर प्लेस, मूव इन द फील्ड। सो द मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज़ अ फैसिलिटेटर वी ऑब्जर्व वेयर द पर्सन इज़ गोइंग एंड मूविंग। उस मूवमेंट में कॉन्स्टेलेशन चेंज हो जाता है। इफ द पर्सन वाज़ स्टैंडिंग हियर एंड देन मूव्ड एंड स्टूड समवेयर एल्स, अब कॉन्स्टेलेशन की एनर्जी पूरी चेंज हो गई है। तो वो मूवमेंट ही अपने आप में बहुत कुछ रिवील कर देती है। ज़रूरी नहीं कई बार पूरा कॉन्स्टेलेशन सिर्फ़ मूवमेंट पे होता है। देयर आर नो डायलॉग्स, ओनली मूवमेंट एंड वी रीच द रेज़ोल्यूशन। तो इंट्यूशन वही है, हाउ डू यू फील इन योर बॉडी? हाउ डू यू फील इन योर इमोशन? वी आस्क द पीपल कि हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? पीपल से आई एम फीलिंग अनईज़ी और आई एम फीलिंग हेवी इन माय शोल्डर्स। तो इमोशन भी बोल रहा है, बॉडी भी कुछ कह रही है, इट्स ऑल इंट्यूशन एंड एवरीवन हैज़ इट। तो बीइंग स्केप्टिकल इज़ गुड। I tell people if you're skeptical, come. But if you're blocked and if you're, already decided that I'm going to manipulate, then it's your wastage of time. So being skeptical is good. Even if you're skeptical, you can feel how do I feel like moving? Would I like to go and stand there? आप जाओ और उसी में एज अ फैसिलिटेटर मुझे पता लग जाएगा कि आपको उस नोइंग फील्ड ने मूव किया है। तो यस, फील्ड इज़ वेरी पावरफुल। And how much of a toll does it take on you personally? Like, because you're obviously your subconscious is there. Your subconscious is also watching everything. It is also taking so many things. So I'm sure it must be taking a lot of toll on you also personally. हाँ, पहले because see we all evolve, we all grow and with every constellation, with every session, I also learn so many things. So हाँ, initially when we were only learning these things and just growing, तो हाँ होता था but there is a modality called theta healing which taught me lot of things and mainly how to stay connected with the source, which some people call God or creator or creative energy. So I put the intention that I'm just a medium. If I think I'm doing it, so yes, it's going to be very heavy for me. So I try to stay a medium, nothing else. Actually, it's very interesting that you mentioned theta healing and theta meditation here, because I'm sure that you'll agree with me here that family constellation is probably part of a larger process, you know, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें involved है. Like I have, people can go to Romshri's website, her academy's website. The link will be there on our comment section, and you can see that there are so many practices that Romshi is involved in. There is inner child therapy, there is past life regression, there is theta meditation, and a lot of things. I think you should definitely, people should go and check out the website to just understand more of this process, you know. तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे. We'll be talking a lot about all these processes, all these things that are there involved around family constellation, and except for that also in our future podcast, and we'll be discussing about it. एक चीज़ जो मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहता हूँ, बिकॉज़ हमने जहाँ से शुरुआत की थी, अनदर सेल्फ, you know, and another self is now made family constellation very popular.
do you see it suddenly becoming a trend? And with that, do you also see people misusing this concept? Maybe not by misusing, I'll just clarify myself. I mean, पूरी knowledge नहीं होने के साथ इस चीज का इस्तेमाल किया जाए, because the country that we live in, we have to agree a lot of such things take place, you know. तो I just want you to talk a little bit about that, कि किससे करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, what should one person be looking out for when one goes out for family constellation? Hmm. So yes, you know, there are all kind of people in every field. So I would only suggest one thing, that if you're going to, have these kind of therapies from anyone, just check for the credibility, check for the certification. I'm not saying that if you have a certificate, you have the perfect one, but still check for the credibility of a person and your intuition, because I believe you get what vibrational frequency you are at. So the kind of person you are, you're going to attract the similar people, similar teachers, similar therapists in your life. But if you are really, really seeking somebody good, check for their experience. Experience is very, very important, especially in family constellation, because I am also, I believe that I'm still learning. It's such a vast subject in science. I'm still learning. But yes, just check for the experience, check for the credibility, check how much that person is, self-observing, self-monitoring, and self-evolving. And that is the most important thing. I think that's so well put by you, Romshri, when you say that, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, it's not just about who you're going for family constellation, but whatever we do, we should be checking our vibrations, We should be checking the energy, what we are feeling, and we should be following our intuition. And thank you so much, Romshri. Like you said, it is such a vast topic. We can hardly cover it in one episode. And we would love to talk to you more about this. We would be talking more about this. And till then, people who have listened to us, if you have liked us, please drop in a comment. If you have some questions with Romshri, which you want us to ask in our future episodes, you want to hear Romshri talking about some other things, you can drop it in the comment section. And thank you so much, guys, for listening. And thank you once again, Romshri, for being here and talking to us about something so rare and so beautiful. It's all my honor. Thank you so much, Shweta, for having me. Thank you so much.